I would like to now, for the keynote address, I would like to welcome to the dais Mr. Atul Chaturvedi, Executive Chairman, Shri Renuka Sugars. I would like to please welcome you for the keynote address. और हमारे सभी अतिथि, हमारे esteemed dignitaries से एक बार फिर से मेरी गुजारिश है कि प्लीज हमारे साथ स्टेज पर बने रहे. जोरदार तालियां हो जाएं अतुल जी के लिए. बहुत बहुत स्वागत है आपका. और सभी जरा कुछ मिनटों में हम लोग हमारा keynote address की तरफ प्रस्थान करेंगे. We will move to our keynote address for today by Mr. Atul Chaturvedi. मंच पे बैठे हमारे साथी और यहाँ पे आए सारे साथीगण, सबसे पहले तो मैं चीनी मंडी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मैंने इतनी सारी शुगर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है. इतनी अटेंडेंस मैंने डेलीगेट्स की आज तक कभी नहीं देखी. तो ये चीनी मंडी की ताकत दर्शाती है. और भी अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब 2 मिनट पहले बोल के गए हैं, मैं उनके बारे में 1-2 शब्द जरूर डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. मेरी ज़िंदगी तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड रही है. और आज से कुछ साल पहले जब मैं अडानी विल्मार को हेड करता था और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन को भी हेड करता था एज द प्रेसिडेंट और चेयरमैन, तो एक बार गडकरी साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ. उस समय इंडस्ट्री बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी और ये तभी भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे. इनको एडिबल ऑयल से कुछ लेना देना नहीं था. तो खैर इनसे मुलाकात हुई. 15 मिनट में वो समझ गए कि क्या तकलीफ़ें हैं. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अतुल तुम आज क्या कर रहे हो. मैं कहा सर आपसे मिलने और अपना दुखड़ा रोने के बाद वापस चले जाएंगे. बोले नहीं, तुम ऐसा करो, एक प्रेजेंटेशन बनाओ मेरे को, मैं आज इस मुद्दे पे सीरियसली टेकअप करता हूँ. आप ताज्जुब करेंगे, जिस चीज़ के लिए हम लोग पिछले 4-5 सालों से लड़ रहे थे वो 3 दिन में ख़त्म हो गई और गडकरी साहब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन बन गए और मैटर्स सब सॉर्ट आउट हो गए. तो मैं समझता हूँ हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि गडकरी साहब जैसा कर्मठ और प्रोएक्टिव डिसीजन लेने वाला अगर मिनिस्टर हम लोगों की इंडस्ट्री में आएगा या इंडस्ट्री से एसोसिएटेड होगा तो मैं समझता हम लोगों की हेल्थ डेफिनेटली सुधरेगी. नाउ लेट मी कम टू द शुगर सेक्टर. पिछले 15-20 दिनों से या 1 महीने से आई हैव बीन रीडिंग और विटनेसिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स इन टर्म्स ऑफ क्या क्रॉप होगी और क्या होना चाहिए और एक्सपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और एथेनॉल का प्राइस बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए. एमएसपी के मुतल्लिक भी कुछ ऐसी बातें सुनाई पड़ती थी और बहुत सारे एसोसिएशंस अपनी अलग अलग बातें करते थे. और आज की तारीख में तो व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया है कि उस पर भी सब व्यूज़ मिलते थे. मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ ये व्यूज़ डेफिनेटली गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस करते थे. तो आज मैं यहाँ पे सब एक से एक इंडस्ट्री के गुरु लोग बैठे हुए हैं, इनसे केवल एक ही इल्तिजा करना चाहता हूँ कि अगर पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर सकती हैं तो व्हाई नॉट जो अपने डाइवर्स एसोसिएशंस हैं, आइस्टा है, इस्मा है या नेशनल फेडरेशन है या सब हैं, तो मैं समझता हूँ इट वुड बी good for the health of the industry if everyone can sit down and thrash out a common minimum program. So once you have the common minimum program, then you will be talking to the government in the same tone. अभी कुछ एक्सपोर्ट का डिसीजन आया, कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग इसकी तारीफ करते हैं. ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया
इसके बेसिस पे लिया कि क्रॉप नंबर्स क्या होंगे। अब क्रॉप नंबर्स तो क्या होंगे तो ये वक्त ही बताएगा, हम लोग तो खुदा हैं नहीं, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में डाटा की कमी हो जाती है। पिछले साल हम लोगों ने भुगता ही है कि ये रिपोर्ट आ रही थी कि गन्ना ही नहीं होगा और चीनी नहीं बनेगी और वो होगा, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि एथेनॉल बैन हो गया और केन जूस अभी हैवी से। तो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, और जिसका जिक्र अभी गडकरी साहब ने भी किया। तो मैं समझता हूँ एक अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर हो जाए सब एसोसिएशंस के बीच में, आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन helping the industry and all the stakeholders of this industry. Industry, in my view, was actually targeting for three major decisions from the government. One was the price increase as far as ethanol is concerned. That was a long-standing demand. The other was minimum selling price to be jacked up, because FRP has been raised almost 35-40% in the last 5 years. But MSP, which has been stuck at 31, still remains stuck at 31. So that is something which is unpalatable. And the other thing is that you cannot have the FRP keep on rising and the selling price stuck. As far as wheat is concerned, the example of wheat is in front of the government. But in that case, the government is compensating by way of food subsidy. They might be buying it at 22 rupees or whatever and giving it at 10 rupees. So government is actually subsidizing it by way of taxing us. Actually, we are the ones who are actually subsidizing it indirectly, or maybe directly as well. So I think it is important that this also needs to be. On the one side, we keep talking that sugar may be not very good for health, and I don't say that we should cut down on the sugar consumption, but what we understand from the National Institute of Nutrition is that 12 kg per capita is probably the ideal. And if we take our consumption at 29 million ton, I think we are much higher than that. So in that case, if the sugar prices go up a little, it is not going to harm anyone. And the third and the last demand which the industry had was on exports, basis that the crop is going to be good and we would be saddled with quite a high level of stocks with us. In industry, we say you use your whatever raw material you have or finished goods which you have on the basis of FIFO, first in, first out. But in this case, the last demand became the first demand, and the first two demand have gone into back burner. As far as the sea molasses price increase is concerned, it will be, as far as the industry is concerned, it's probably going to be practically a non-event. So because most of the sugar would have been produced, because the season is likely to be much shorter, so I think we will have to live with this. The other thing which I thought is important is, why should the government have plethora of rates? You have maize at 71.86 rupees a liter, rice ethanol at something like 57 or 58 or whatever, and cane juice at 65. Obviously, with so many rates being available for the same product, some leakages are bound to happen. I'm not saying that the leakages happen, but there's no reason to have three rates. Why not have one rate for all these products? And
as far as rice is concerned, the original issue price of rice was thought to be 28, which is the issue price for OMSS. Why do you need to reduce it to 22.5 or whatever? Sensible would have been to keep the price at 28 and give them a higher price for ethanol. So that would compensate, so they wouldn't lose the money. So, and the argument that the OMCs will lose money, to me, doesn't make too much of a sense, because FCI and oil marketing companies both are owned by the government. So in this scenario, I thought it's important that these three prices should get aligned. Obviously, now cane juice is out of the window because that decision is over and done with, and the cabinet only met yesterday, and all our hopes of some decision coming in positively have actually been dashed. The other is, and I think it's important from the perspective of decision makers. In fact, the Food Ministry had carried out a research over a long period of time, and it was done by national institutes. The conclusion was that for making 1 liter of ethanol, you need 3 liters by way of maize and rice, and only 2 liters by way of sugarcane. So in that scenario, I think it's important that all these charges, all these allegations of sugar being a water guzzler get nullified. I think the beautiful lady has already told me you've probably crossed your time. So I'll say thank you very much. And I am sure we will have a reasonably good season. All the best. Thank you.